Good morning, class. Today I am going to express the view on the topic tenses. In the first video, I have already explained present tense, present indefinite, and the present continuous. Now, in the present tense, the third tense is present perfect. Present perfect tense इस टेंस में वर्क का कंप्लीट होना पाया जाता है। द पर्सन हैज कंप्लीटेड द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मीन्स जिस टेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड आते हैं, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? चुका है, चुके हैं, चुका हूं, एक्सेट्रा। ये वर्ड जिस सेंटेंस से एंड में आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। नाउ द रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज, हैव, third form and the remaining part of the sentence. Subject is singular and plural. Subject यदि singular है then we will use has, and the subject is plural we will use have, and verb is third. For example, Rohit has written a letter. मीन्स रोहित एक लेटर लिख चुका है, मीन्स रोहित अपने पत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर चुका है। नेक्स्ट है आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं। वी हैव प्लेड द मैच। Now in the affirmative sentences, the affirmative subject has have verb is third form, the remaining part of the sentence. For giving the example, Rohit has written a letter means Rohit एक पत्र लिख चुका है। I have eaten the food, मैं खाना खा चुका हूँ। We have played the match, हम मैच खेल चुके हैं। Now in the negative, negative sentence, subject has, have, not, third form, इसमें क्या है कि मैं
मैंने खाना नहीं खाया है या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। बच्चे स्टोरी नहीं लिख चुके हैं। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैव written the children have written a story book. A negative sentence, have not written a story book. Next, Rohit has not played the game. So dear student, tense is present perfect, and the next is affirmative and the negative, and the next is interrogative sentences. Interrogative sentences, when the sentence will be start has and have, and the another interrogative sentence will be start subject and in between of the sentence giving the question word. For example, हम खाना क्या हम खाना खा चुके हैं? क्या हम खाना खा चुके हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म plus remaining part of the sentence and the question mark. Interrogative words, has, have, subject, third form, question mark. क्या हम खाना खा चुके हैं? Have, example, have we eaten the food? Question mark. Next, the interrogative sentence. Have he eaten the food? Has he flew a kite? So now dear student, this sentence present perfect tenses, and the sentence will be start have and has, and we will start the interrogative words. Interrogative words sentence where, when, have you come to Delhi? When have you come to Delhi? तुम दिल्ली से कब आए हो?
So now, dear student, the interrogative sentence we use subject and the have and has. जब सेंटेंस हमारा क्या सबसे शुरू होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यूज करते हैं, और जब हिंदी में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखकर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है subject not short form interrogative words has subject not short form question. Has Mohit, example, has Mohit not taken food? Have you not played the cricket? Dear student, finish of the present perfect tense. Before closing the present perfect tense, I have told you कि now has have its subject verb is short form. There are given the rules and the examples, the rules and the examples. And the next tense is a present perfect continuous. Present perfect continuous tense जिस टेंस के एंड में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। साथ ही साथ उनमें क्या होता है, देयर आर गिविंग द टाइम, सेंटेंसेस में टाइम दिया हुआ होता है। टाइम मींस देयर आर टू टाइप ऑफ टाइम्स, certain of time या period of time and uncertain of time, निश्चित समय और अनिश्चित समय। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिंदी में क्या आता है सेंटेंस में, रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रही हैं। रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है, इस टेंस के बीच में टाइम दिया होता है। देयर आर गिवन द टू टाइप ऑफ टाइम, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है।
Affirmative sentences. Rule says subject has been, have been, then first form and ing plus dot 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 and the time. पिछले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था हैज और हैव का यूज। सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। द सेम कंडीशन हियर इज अप्लाई। हैज इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर and have is used for the plural. Been but the first form and ing dot the remaining part of the sentence and the time. Example: मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हूँ आया तो now I have been playing cricket for 2 hours. For is the uncertain of time. Uncertain of time means uncertain. Certain of time, Monday, name of the day, Sunday, Monday, name of the month, January, February, March, etc. Time 3 o'clock, 4 o'clock, years 2020, 2010, 2011, 2012, 2014, etc. This is the certain of time. Name of the day, name of the month, timing or year. Uncertain of time. Uncertain of time. Number of days. 2 days, 5 days, 7 days, etc. Number of months. Number of months, 4 months, 5 months, 6 months, etc. Next, hours, 4 hours, 5 hours, so now number of years, 5 years, 6 years,
8 years, etc. etc. So now there are two types of time: certain of time, uncertain of time. Certain time means निश्चित समय, uncertain of time means अनिश्चित समय. Use of for or use of since. So dear student, example, I have been playing cricket for 2 hours. 2 hours uncertain of time, अनिश्चित समय. Suppose Rohit has been living in this town since 2011. Here is since is a certain of time. Certain of time. Certain of time. Dear student, present perfect continuous affirmative sentence दूसरा subject has been verb की first form adding ing and the time. Next is a negative. Subject has, have not been first form and ing then plus time push stop. Subject has have not be but the first form add ing and not remaining part of the sentence and the time. Example, they have not been writing a project, writing a storybook for 2 hours. He has not been working in this office, in this school since April. So dear student, present perfect continuous tense में continue working and show the time. उसमें क्या शो होता है? टाइम शो होता है. Affirmative and the negative I have already explained. Now next is interrogative sentences. Interrogative sentences, ये मैंने पहले बताया interrogative sentences has, have, subject, be, first form and ing plus ... the time and the question mark. Into
interrogative words has, have, subject, be, first form, and ing dot 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 plus sign. Has, have, क्या रोहित 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? क्या रोहित has, रोहित का सिंगुलर has रोहित been reading a book or according to the subject is Rohit is a singular. Now, next example, have the children been standing have the children been standing on the gate since 8 o'clock? So dear student, everybody understood he has and निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करेंगे? निश्चित समय के लिए हम सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम और का यूज करेंगे. Have the children been standing on the gate since 8 o'clock? Interrogative words when, has Mohit come to Delhi for 2 hours? Understood? So dear student, now the present perfect continuous interrogative sentences. Now next, the last is interrogative plus negative sentences. Has, had, subject, not, be, first form, and ing plus dot time, the question mark. Interrogative words has, have, subject, not, be, first form, and ing dot plus time. For example, has Mohit been taking have not been taking bath since 6 o'clock, and has be not be playing football
4 3 hours. Understood? So dear student, now finish the present perfect continuous. Present perfect continuous. Now present perfect continuous, and the next is the past simple past. So now dear student, finish the present perfect continuous, and the next video is the sentence, next is the past. So dear, now everybody note on the flat copy, and the next video on the past tense, the next term. Thank you very much.